Hello, welcome. So today we will be doing habit two, which is starting with the end in the mind. And so yesterday we talked about visualization and imagination and how we need to know the purpose of life and know what we truly desire to create in our lives and to know what should be the at the end of our funeral when we die, and at a funeral what people will say about our lives. Like, we need to really know what I want my life to be all about. So today we will be creating a personal mission statement. It's again an exercise, like you have to write it and do it. So, a personal mission statement. So we will create a paradigm like the way we created before, of circle of influence and circle of concern. Same way for the habit number two, which is start with the end in the mind. We will create a value system, like what it really matters to us, what should be our personal value system, a guide through system of making decisions. So जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो we don't want to be reactive. Stimulus and response में difference होता है ना. We will take actions based on our values, और वो values system क्या होना चाहिए वो अपन आज create करेंगे, such that we are not being reactive to situations and circumstances and other people's behavior. In that way, we will not be dependent on our circumstances and surroundings. We will only operate from our own value system, which we will clearly create today. कि अपनी जो सेंटर ऑफ सेल्फ वर्थ है, जो अपना सेंटर ऑफ सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, वो कहाँ से आ रहा है, वो वैल्यू सिस्टम अपन आज क्रिएट करेंगे. सो वी विल नॉट be dependent on our circumstances and people around. That way we will be able to make independent decisions. So we are creating a personal mission statement for the same, so such that each and every action which we take, each and every decision that we take in our lives will come from our personal mission statement. A personal mission statement is the most effective way I know to begin with the end in the mind, is to develop a personal mission statement, akka philosophy or your creed. So Anishka की personal philosophy of life क्या होगी, गौरव जी की personal philosophy of life क्या होगी, रिचा की personal philosophy of life क्या होगी. That is, it focuses on what character you want to be, contribution, what contribution you want to do, achievements, the values and principles upon which being and doing are based. So what kind of achievements do you want to have, the values and principles which you want the core of you to be. Like Gaurav ji should be known ki he's a man of integrity, right? Anishka should be known as a man of integrity, or whatever value you create. They say Mother Teresa was all about compassion, right? Gandhi ji was all about satyagraha, non-violence. So it's the values and choice that you make, that one value you want to make your life about. तो वो अपन clarity आज ले आएंगे, such that all your actions are in alignment with your personal mission statement. Because each individual is unique, a personal mission statement will reflect that uniqueness both in content and form. इससे आपको क्या, जब डिसीजन मेकिंग करोगे ना, तो यू विल नॉट बी स्कैर्ड कि मैं सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सही है ये गलत है, उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, इसको, वो सब सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. बिकॉज यू विल बी वेरी वेरी क्लियर where to come from, what is your value, what is it that is very very important to you. जैसे किसी का पर्सनल, ये रॉफकर हैज एक्सप्रेस हिज पर्सनल
क्रीड इन दिस वे, उनने अपना पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह से बना रखा है। तो ये एग्जाम्पल है। सक्सीड एट होम फर्स्ट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, seek and merit divine help, keep a sense of humor, never compromise with honesty, be orderly in person and in work, do not fear mistake, fear only in absence of creative, hear both sides before judging, and so forth. Right? Hustle for what you want. A woman seeking to balance family and work values has expressed her sense of personal mission differently. एक उसका है, I will seek to balance career and family as best I can, since both are important to me. My home will be a place where I and my family, friends, guests find joy, comfort, peace, happiness. Still, I will seek to create a clean and orderly environment, yet livable and comfortable. I will exercise wisdom in what I choose to eat, read, eat, do at home. I especially want to teach my children to learn, to love, develop unique talents. ये एक लेडी का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है. I value the rights and freedom and responsibility of democratic society. I will be self-starting individual who exercises initiative, life goal. I will keep myself free from addictive and restrictive habits. ये इसकी value system है. My money will be my servant, not my master. I will seek financial independence over time. I will spend less than I earn and regularly save an interest part of my income. Moreover, I will use that money and talents I have to make life more enjoyable and others through service and charitable giving. You could call a personal mission statement a personal constitution. एक तरह से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. You are creating a constitution for your own self, your value system, your rules and guidance and principles to go for and look up to before making any decision. The United States Constitution is a standard by which every law in the country is evaluated. It is the document the president agrees to defend and support, and he takes the oath of office. तो उसी तरह से अपन अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाएंगे और अपन ओथ लेंगे टू लिव अ लाइफ बाय थ्रू दैट लेंस. The Constitution has endured and served its vital function today because it is based on correct principles and self-evident truths contained in the Declaration of Independence. तो अपन जो अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू स्टेटमेंट में बनाएंगे. A personal mission statement based on correct principles becomes the same kind of standard for an individual. It becomes personal constitution, the basis of making major life direction decisions, and it empowers individual with the same timeless strength in the mind. अब जब चेंज आता है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, आप मिशन स्टेटमेंट देखोगे अपना, तो आप बहुत इजीली शांति से ना डिसीजन ले पाओगे. People can't live with change if there is not a changeless core inside them. The key to the ability to change is a changeless sense of who you are and what you are about and what is your value. So सबकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, बट अगर आपको who गौरव इज अबाउट, who अनिष्का इज अबाउट, who रिचा इज अबाउट क्लियर है ना. जैसे फॉर मी, my personal mission statement is that no matter what, I will be empowered as a human being. I will live an empowered life, a life of self respect and self love. That's very, very critical to who I am. I will be a leader, I will be empowered. I don't want to be a victim in life. I don't want to operate from that ki, I am helpless. So मेरा core mission statement है, no matter where I am living, what I'm doing, whatever decision I'm taking, the decision should at the end make me feel empowered. So that's my personal mission statement. With the mission statement, we can flow with changes. We don't need prejudgments and prejudices. We don't need to figure out everything else in life, to stereotype or categorize everything or everybody in order to accommodate the reality. तो आप रियलिटी होगी और सर्कमस्टेंस होगा, आप उसको अपने ऊपर ओवरपावर नहीं करने दोगे. You will be able to make a decision very easily and clearly. Our personal environment is also changing at ever increasing pace. Such rapid changes burn out a large number of people who feel they can hardly handle it or cope up with life.
But it doesn't have to be that way. In the Nazi death camp, Viktor Frankl learned the principle of proactivity. He also learned the importance of purpose, of meaning in life. The essence of logotherapy, the philosophy he later developed and taught, so-called mental and emotional illness, are really symptoms of underlying sense of meaningless and emptiness. तो आपकी अंदर से अपन को है ना अपना कोर मीनिंग ऑफ हु गौरव इज, हु अनिष्का इज अबाउट, हु रिचा इज अबाउट क्रिएट करना है. Once you have that sense of mission, you have the essence of your own proactivity. You can have the vision and values which direct your life. You have the basic direction from which you set your long and short term goals. You have the power to written constitution based on correct principles against which every decision concerning the most effective use of your time, talents and energies will be effectively measured. At the center, in order to write your personal mission statement, we must begin with the center of circle of influence. The center composed of our more basic paradigms, the lens through which we see the world. It is here that we deal with our vision, our values. It is here that we use our endowment of self awareness to examine our maps, if we value correct principles, if to make certain that our maps accurately describe the territory, our paradigms based on principles and reality. It is here that we use our endowment of imagination to mentally create the end we desire, give directions and purpose. It is also here that we, our focused efforts, achieve the greatest results. As we work in the circle of influence, we expand it. Whatever it is at the center of life will be the source of our security, guidance, wisdom, and power. ये चार चीज है. Whatever is at the center of our life will be the source. अपन को ये चार चीज की needed होती है हमेशा. Security, guidance, wisdom, and power. ये इधर नहीं बना हुआ, मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ ये डायग्राम. ये देखो. So each person wants to become. नहीं आ रहा. No, we can't see Richa because now it is. No, we can't see Richa. I know, I'm trying. दिख रहा है? So इसमें सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम एंड पावर चारों में बना हुआ है, चारों डायरेक्शन में. मैं फोटो शेयर कर दूंगी, मैं फोटो शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे. Security represents your self's sense of worth, your identity, your emotional anchorage, your self-esteem, your personal strength and lack of it. तो security मतलब आपकी self-esteem कहाँ से आ रही है? Guidance means your source of direction, your map, your internal frame of reference. It governs decision making moment by moment. And wisdom is your sense of balance, your understanding how various parts and principles relate to each other. Your judgment uh, comes from here. And power is your faculty and capacity to act, the strength and potency to accomplish something. It is the vital energy to make choices and decisions. It also includes the capacity to overcome deeply embedded habits and to cultivate higher and more effective ones. These are the four factors: security, guidance, wisdom, and power, and are interdependent. Security and clear guidance bring you true wisdom. Wisdom brings spark and catalyst to release and direct power. When these four factors are present together, harmonized, aligned, you will have a balanced and beautifully integrated individual. These are life support factors in every dimension of your life. So, security is your self worth and self esteem, guidance, source of direction, power आपको choices और decision making में help करती है, wisdom is how you see and be.
You're basically dependent on circumstances and other people, things over which you have no direct control. On top of top end, you are in control. The strength and foundation of rich independent relationship. Your security lies somewhere on the continuum between extreme insecurity at one hand, where your life is buffeted with the fickle forces that play upon it, and deep sense of high intrinsic worth, personal security on the end. अब इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे ये है ना अ, होता है. अब अपन देखेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स. ईच ऑफ वन हैज अ सेंटर थ्रू विच वी यूजुअली डोंट रिकॉग्नाइज इट एज सच. नीदर डू वी रिकॉग्नाइज द. अब किसी किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है. कोई स्पाउस सेंटर्ड होता है, कोई मनी सेंटर्ड होता है, कोई फैमिली सेंटर्ड होता है. और उस सेंटर्डनेस मतलब अपन उसको देखते हैं कि अपन को अपन अपनी सिक्योरिटी, अपना डिसीजन मेकिंग, अपना चॉइसेस एंड हाउ वी सी द वर्ल्ड किस सेंटर से डिवाइड करते हैं. कौन सी वैल्यू से अपन अपनी सिक्योरिटी लेते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ लेते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं, चॉइस एंड डिसीजन लेते हैं. मतलब किस चीज को अपन इंपॉर्टेंट रखते हैं. समझ में आ रहा है? किसी सब आप लोग ने सबने व्हाट्सएप पे देख लिया. ये बीच में सेंटर बना हुआ है और चारों तरफ सिक्योरिटी, गाइडेंस, पावर और विजडम बनी हुई है. तो ये बोल रहा है अपन जिस तरह से लाइफ को देखते हैं ना, अपन किस सेंटर से देखते हैं वो अपन आज देखेंगे. एक तो होता है स्पाउस सेंटर्डनेस. Marriage can be the most intimate and most satisfying and most enduring growth producing human relationship. It may seem natural and proper to be centered on one's husband and wife, but experience and observation tell a different story. अगर आप अपनी पूरी लाइफ स्पाउस सेंटर्ड कर लेते हो या मैरिज सेंटर्ड कर लेते हो कि आपकी इमोशनल वर्थ ही आपकी शादी से आती है, then we become highly dependent on our relationship. We become vulnerable to the moods and feelings and behavior and treatment of our spouse, to any external event that may अपनी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगी. अपन इम्पैक्ट होंगे उससे. लाइक यू विल नॉट बी इमोशनली स्टेबल बिकॉज आपका सेंटर्ड क्या है, हस्बैंड या मैरिज. अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे या यू आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग इन देयर, आपको अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, आपका सोर्स ऑफ डायरेक्शन, हाउ पीपल लुक एट यू एंड हाउ यू जज योर सेल्फ कम्स फ्रॉम योर मैरिज, देन आपकी पूरी दुनिया ही आपकी शादी है. और वहां पे कुछ भी गलत होगा या आपके हस्बैंड को कुछ भी हो जाएगा या इफ ही इज नॉट बिहेविंग राइट, देन आपका सेल्फ एस्टीम ऐसे नीचे गिर जाएगा. किसी ने कमेंट कर दिया आपकी शादी अच्छी नहीं है तो आपका सेल्फ एस्टीम ऐसे नीचे गिर जाएगा. बिकॉज योर everything, your whole identity is based on your marriage. When responsibility increase and stresses come in the marriage, we tend to revert to the scripts we were given as we were growing up. These scripts are usually different ways of handling financial, children discipline, in-laws issues come to the surface. When these deep-seated tendencies combine with emotional dependency on the marriage, the spouse-centered relationship reveals all its vulnerability. मतलब vulnerable हो जाते हो, कोई problem आएगी तो. When we are dependent on the person with whom we are in conflict, both need and conflict are compounded. Love hate overreactions, fight over fight, withdrawal, aggressiveness, bitterness, resentment, cold competition सब होएगा because आप emotionally dependent हो उस relationship पे. अपन ये लास्ट पढ़ लेते हैं and then we अपन family centeredness देखेंगे. There is only phantom security in such a relationship when all appears going to be well. जब आपकी relationship अच्छी चल रही होगी और आप marriage centered हो तो आप बहुत खुश होगे. जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आएगी शादी में, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ सब खत्म हो जाएगी. Guidance is based on emotion of the moment. Wisdom and power and lost in counter dependent negative interactions. तो आपकी अगर नेगेटिव कुछ भी होता है तो आपकी विजडम भी खत्म हो जाएगी, पावर भी खत्म हो जाएगी. तो दैट मीन्स आप कि सारा जो आप अपने सेंस ऑफ वर्थ ले रहे हो ना, आप प्रिंसिपल ड्रिवन नहीं हो. आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट किसी वैल्यू एंड प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट नहीं है. आपकी सारी की सारी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम अपनी शादी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने अपनी शादी को सेंटर बना रखा है विजडम का, पावर का, सेल्फ एस्टीम का.
गाइडेंस का, आप सारे डायरेक्ट डिसीजंस ही उस बेसिस पे लेते हो। अब अपन लेते हैं फैमिली सेंटर्डनेस। तो ये अभी आपको क्या करना है, नोटबुक को पेन लेना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम कहाँ से लेके आ रहे हो? आर यू फैमिली सेंटर्ड? आर यू रिलेशनशिप सेंटर्ड? आर यू फाइनेंस मनी मनी सेंटर्ड? अभी अपन और सेंटर्स देखेंगे। Another common center is family. This too may seem to be natural and proper as an area of focus and deep investment. It provides great opportunities for deep relationship, for loving, for sharing, for much make life worthwhile. But as a center, it ironically destroys very elements necessary to family success. अगर आप फैमिली सेंटर्ड हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप रिएक्टिव हो जाओगे, बिकॉज आप अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ ही अपनी फैमिली से ले रहे हो। तो people who are family centered get their sense of security and personal worth from family traditions, culture, family reputation. Thus, they become vulnerable to any changes in that. Family centered parents do not have emotional freedom, the power to raise their children with their ultimate welfare truly in mind. अगर आप फैमिली सेंटर्ड हो तो आप अपने बच्चे को उसके ट्रू अल्टीमेट वेलफेयर की तरह नहीं देखोगे, आप ये देखोगे हमारी फैमिली में क्या चलता है जी, हमारी फैमिली के ट्रेडिशन में क्या चलता है जी। हमारा फैमिली का ट्रेडिशन है कि है ना हमारे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती, तो मेरा बेटा शादी तो मारवाड़ी परिवार में ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो फैमिली, आपका क्या है कि ये फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, फैमिली का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका गाइडेंस सिस्टम, everything is coming from family. Your power, your identity, the way you decide, the way you think, everything is dependent on family because your identity is coming from there. So you will not be able to make a balanced decision, the decision by keeping the ultimate welfare truly in mind. You will be biased in making decisions. If they derive their own security from family, they need to be popular with the children. uh, their children may override the importance of long term investment in children's growth and development. आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाओगे, आप शॉर्ट टर्म फैमिली 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 का ही सोचोगे। एनी बिहेवियर दे कंसिडर इम्प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा, जो फैमिली के ट्रेडिशन और वैल्यूज और फैमिली के देखने के तरीके से मैच नहीं होता, यू विल फाइंड एवरीथिंग टू बी रिबेलियस। दे टेंड टू लव देयर चिल्ड्रन कंडीशनली, make them emotionally dependent and rebellious on the family values. नेक्स्ट होता है मनी सेंटर्डनेस। तो अभी एक्सरसाइज क्या करनी गौरव जी, अनिष्का एंड गरिमा, स्टार्ट लुकिंग इन योर लाइफ वेयर यू आर ड्रॉइंग योर सेंटर्ड योर सेल्फ एस्टीम फ्रॉम। आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, डिसीजन मेकिंग कहाँ से ड्रॉ हो रही, स्टार्ट चेकिंग। Money centeredness, another logical and extreme commonly center for people's life is making money. Economic security is basic to one's opportunity to do much in another dimension. So आप क्या करोगे, बहुत से लोग इकोनॉमिक, most of us face economic worries. Many forces in the wider culture can do and act upon our economic situation, causing a threatening such as disruption in our way of living. Sometimes there are apparently noble reasons given for making money, such as desire to take care of one's family. But these things are important. But to focus on money making as a center will bring undoing. Consider again the four life support factors: security, guidance, wisdom, power. Suppose I derive much of my security from my employment, from my income, from my net worth. Since factors affect the economic foundations, I become anxious, uneasy, protective, and defensive about anything that may affect them. अगर आपकी प्रॉफिट नीचे जा रहा है, आपका आपकी जॉब चले जाती है, तो आप बहुत वनरेबल हो जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी आइडेंटिटी है पैसे से रिलेटेड। आप पूरी सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग सब पैसे से रिलेटेड करते हो। Money centered people often put aside family and other priorities, assuming everything will be understand that economic demands come first. ये देखने का तरीका होता है जो मनी सेंटर्ड होता है। I know one father who was leaving his children for a promised trip to a circus when a phone call came for him to make work instead. अगर आपने प्रॉमिस कर रखा है बच्चों को कि मैं सर्कस पे जाएंगे, और आपका घर फोन में कोई घर पे आपके कोई इमरजेंसी आ गई,
जॉब में, तो आप उसको कैंसिल करके, आप सर्कस को कैंसिल करके आप पैसे के पीछे भागोगे, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ सेल्फ एस्टीम इज मनी. When his wife suggested that perhaps he should have gone to work, he responded, "The work will come again, but childhood won't." For the rest of their lives, his children remembered this little act of priority setting, not only as object lesson in the mind, but an expression of love in their hearts. क्योंकि वो मनी सेंटर्ड नहीं था. Work centeredness. Work centered people become workaholics, driving themselves to produce output at the sacrifice of health, relationship and important areas of life. जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं इफेक्टिव नहीं हूं, मैंने आज ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो मेरा सारा फोकस, मेरी आइडेंटिटी कमिंग फ्रॉम इफेक्टिवनेस, मतलब मैं जज ही खुद को अपनी इफेक्टिवनेस से करती हूँ कि आज मैंने कितना काम किया जी. मेरी आइडेंटिटी मेरे वर्क से आ रही है. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ राइटर, आई एम एन एक्टर, आई एम अ हाउसवाइफ. अगर आप किसी दिन बीमार हो गए, तो बहुत सी लेडीज होती है हाउसवाइफ होने के बाद भी, वो किचन में काम करेगी, वो मर रही है, उनकी बॉडी में जान नहीं है, तो भी काम करेंगी. क्यों? उनकी आइडेंटिटी उनके काम से आ रही है. Because their identity and sense worth are wrapped up in their work, the security is vulnerable to anything that happens to prevent them from continuing it. मतलब ही centeredness अपन की weakness है. If we are money centered or work centered or family centered or spouse centered, we will not be able to make balanced decision. We will not be able to make decisions which are practical. Are you understanding? Is it communicating? Gaurav ji, Anishka ji, बोलिए. गरिमा, Yes, yes. communicating? Yes, yes. समझ में आ रही है? Yes. It's a एकदम. weakness and a strength in some cases. हाँ, तो आपको ये चेक करना है आप आइडेंटिटी कहाँ से ले रहे हो, अपनी अपनी सेल्फ वर्थ कहाँ से ले रहे हो, किस किस एरिया ऑफ लाइफ को आपने अपना सेंटर बना रखा है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ का. Their wisdom and power come in limited areas of their work, rendering them ineffective in other areas of life. Possession centeredness. A driving force of many people is possession. Not only tangible, material possessions such as fashionable clothes, homes, car, boats, jewelry, but also intangible possessions of fame, glory, social prominence. Most of us are aware through our own experience how singularly flawed such center is, simply because it vanished rapidly. जैसे अगर आज मेरे पास गुच्ची और लुई विटॉन का बैग नहीं होगा ना, तो मेरी सेल्फ वर्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगी. बहुत से लोगों की होती है. फीमेल्स में मेरे पास अगर बड़ा डायमंड नहीं है ना, तो मेरी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी अगर सामने वाले के पास बड़ा डायमंड आ गया तो. क्यों? बिकॉज मेरी पूरी सेंस ऑफ हु आई एम इज डिपेंडेंट ऑन माई मटीरियल पोजेशंस. अब इसमें कोई सही और गलत नहीं है. वी जस्ट हैव टू सी हाउ इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग इमोशनली, मेंटली, then it makes us helpless. In my sense of security lies in my reputation and in the things I have. My life will be in constant state of threat and jeopardy that these possessions may be lost, stolen or devalued. We all have heard stories of people committing suicide after losing their fortune in significant stock decline and their fame in a political reversal. अच्छा, ये जो भी सुसाइड्स होते हैं ये इसलिए होते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक चीज पे सेंटर्ड होते हैं, और जैसे ही वो चीज में थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है वो सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी उस चीज पे डिपेंडेंट होती है. If I'm in the presence of someone of greater net worth or fame or status, I will feel inferior. If I am in the presence of someone of lesser net worth, fame or status, I feel superior. आपकी सेंस ऑफ वर्थ ही आप मटीरियलिस्टिक चीजों से ला रहे हो. Pleasure centeredness. Another common center closely allied is with possessions is that of fun and pleasure. We live in a world where instant gratification is available and encouraged. But while the glitter of pleasure centered lifestyles is graphically portrayed, the natural result of such lifestyle is the impact of inner person productivity on relationship is accurately seen. Innocent pleasures is in moderation can provide relaxation to the body and mind, can foster family, but pleasure as per se deep lasting satisfaction और self fulfillment. बहुत से लड़के लड़कियां हैं
या इवन कपल्स हैं, उनकी पूरी लाइफ प्लेजर पे डिपेंडेंट है। वो कितनी पार्टीज कर रही है, कितनी सोशल लाइफ में जा रहे हैं, उनकी पूरी आइडेंटिटी उनकी सोशल लाइफ और फन लविंग पीपल से आ रही है। देयर आर मेनी सोशलाइट्स, हाउ आर दे सोशलाइट्स? उनने पूरी इमेज, अपनी सेल्फ वर्थ सोशलाइजेशन पे डिपेंड कर रखी है। अभी कोई सही चीज, सही गलत की बात नहीं है। इट्स जस्ट सेइंग दैट इफ यू आर ड्रॉइंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम वन एरिया ऑफ योर लाइफ, then you're dependent on that area of your life. May it be marriage, money, work, effectiveness, pleasure. Are you understanding? A person in this state becomes almost entirely narcissist, interpreting all of his life in terms of pleasure it provides to the self here and now. अगर कोई चीज आपको प्लेजर नहीं देगी उस चीज से, तो आपको अपनी लाइफ और आपको अपने बारे में बहुत गंदी फीलिंग आएगी. Too many vacations that last too long, too many movies, too much TV, too much video game playing, too much undisciplined leisure time in which a person continually takes the course of least resistance, gradually waste of life. In retrospect, all exercise in self-gratification seems pure fantasy, licking the earth. अब आती है नेक्स्ट, एनिमी इन फ्रेंड सेंटर्डनेस. अब अपन फ्रेंड एंड एनिमी पे भी सेंटर्ड हो जाते हैं. Young people are particularly, through certainly not exclusively, susceptible to becoming friend-centered. Acceptance and belonging to a peer group और acceptance and belonging in a family, जब कोई फीमेल शादी होके जाती है नए घर में, वो उसका सेंटर्डनेस हो जाता है कि मेरे को मेरी फैमिली मेंबर्स कितना प्यार कर रहे हैं, एम आई बिलोंगिंग और नॉट. उसकी पूरी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बिलोंगिंगनेस से आती है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत से लोग सोशल गैदरिंग से कि मैं तो भाई इस क्लब का मेंबर हूँ, मैं तो उस क्लब का मेंबर हूँ, उसकी पूरी आइडेंटिटी बिलोंगिंगनेस से आती है. और कोई नया बड़ा क्लब खुल गया जिसका वो पार्ट नहीं है, तो वो पागल हो जाएगा. वो सारे फाइनेंस कहीं से भी पैसा लाएगा, पर वो उस क्लब का पार्ट बनेगा. क्यों? क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी बिलोंगिंगनेस से आ रही है. who he or she belongs to, right? The distorted and ever-changing social mirror becomes the source of their four life supporting factors, creating a high degree of dependence on the fluctuating moods, feelings, attitudes, and behaviors of others. Friend-centeredness can also focus exclusively on one person, taking one of the some dimensions of marriage. Emotional dependence on one individual, escalating need and conflict spiral, resulting in negative interactions, can grow out of friend-centeredness. And what about putting an enemy at the center of one's life? Most people will never think of it, but a lot of people, जैसे अगर आपकी किसी से rivalry हो गई, तो आपका पूरा centered of नेस ऑफ सेल्फ वर्थ विल बिकम कि यार मेरे को बस उससे अच्छा बनना है, उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए. मैं एटलीस्ट इस बंदे से अच्छा या अच्छी होनी चाहिए, मैं उस बंदे या बंदी से सक्सेसफुल ज्यादा होनी चाहिए. आपकी लाइफ का देखने का तरीका ही वो बन जाएगा. आप वो हर चीज करोगे जिससे आप उससे कंपटीशन में जाओ और उससे कंपटीशन में जीतो. उसकी प्रेज मिल गई तो आपका सेल्फ वर्थ और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ नीचे चल जाएगा. वो एक दिन सुंदर दिख गई या सुंदर दिख गया या उसको कुछ ज्यादा मिल गया आपसे, तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का देखने का तरीका, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, पावर, सिक्योरिटी, सब उस बंदे पे बेसिस कर लिया आपने. Rather than proactively leading his own life, the enemy-centered person is counter-dependent reactively to the behavior and attitude of a perceived enemy. आपका कोई परसीव्ड एनिमी है, आपको जिस किसी से जलन है, कंपटीशन है, तो आपकी पूरी लाइफ उससे कंपटीशन करने में निकल जाएगी. One friend of mine who taught at a university became very distraught because of the weakness of a particular administrator with whom he had a negative relationship. He allowed himself to think about the man constantly until eventually it became an obsession. Sometimes we आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो, लड़कियां होती है वो ऑब्सेस्ड बन जाती है अपनी सास या जिठानी या ननद या देवरानी से. उनकी पूरी लाइफ ही उनसे कंपटीशन में निकलती है. उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया. सारे थॉट्स, फीलिंग्स उसी पे डिपेंडेंट होते हैं. सिमिलरली फॉर मेन ऑल्सो,
if you have a competitor in your life and you're totally, आज उस ब्रांड इसने आज ये निकाल दिया, उसने आज वो कर दिया, इसने आज प्राइस ड्रॉप कर दी, आप अपनी पूरी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ उससे कंपटीशन से निकालते हो. Wouldn't you really prefer to teach at this university if the man were not here? I asked him. Yes, I would, he responded. But as long as he is here, then my staying is too disruptive everything in life. I have to go. So बहुत से लोग हैं ना जॉब छोड़ के चल जाते हैं या कंपनी छोड़ देते हैं या कुछ छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार ये बंदा है ना तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती. क्यों? क्योंकि आपका पूरा सेंस ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ इज कमिंग फ्रॉम हिम और हर in comparison to him or her. तो आपने पूरी अपनी लाइफ की सेंटर्डनेस उस बंदे या बंदी पर डिपेंड कर दी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. Why you have made this administrator the center of your life? I asked him. He was shocked by the question. He denied it. But I pointed out to him that he was allowing one individual and his weakness to distort his entire map of life, to undermine his faith and the quality of his relationship with his loved ones. वो एक बंदा आपकी लाइफ को इतना इम्पैक्ट कैसे कर सकता है? आपकी लाइफ में अगर आप किसी एक बंदे या एक सिचुएशन से इम्पैक्ट हो रहे हो, to have to figure out why and how are you dependent on that person or that area of life? How are you making that person or life to draw your self-worth and self-identity? He finally admitted that this individual had such an impact of him that he denied that he himself made all these choices. He attributed the responsibility for the unhappy situation to the administrator. He himself declared he was not responsible. मतलब आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी खुद की खुशी को किसी और पे दे देते हो क्योंकि आपने उसको ब्लेम कर रहे हो या आप उससे कंपटीशन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो. As we talked little by little, he came to realize that he was indeed responsible, but that because he did not handle this responsibility well, he was being irresponsible. Many divorced people fall in the similar pattern. They are still consumed with anger and bitterness and self-justification regarding an ex-spouse. In the negative sense, psychologically, they are still married. They each need the weakness of another person to justify the accusation. जैसे मैं बहुत फैमिली सेंटर्ड हूँ तो मैं पूरी की पूरी आइडेंटिटी हाउ पीपल treat me in my family, I will draw my self-esteem and self-worth from that. That's why I shared what I shared. Because क्यों? मैं पूरी फैमिली सेंटर्ड हो गई. मैं मे बी बिजनेस में बहुत बढ़िया कर रही हूँ, राइट, बट आई विल स्टिल सल्क. क्यों? क्योंकि मैंने पूरी आइडेंटिटी अपनी फैमिली पे बेस कर ली. मेरी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, मेरा डिसीजन मेकिंग, मेरा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सब कुछ फैमिली से आ रहा है. गरिमा, डू यू वांट टू से समथिंग? Same here. Even I am a very family-centered person. हाँ, तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ वहां से ड्रॉ कर रहे हो. और अगर अपनी सेल्फ वर्थ वहां से ड्रॉ कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक डिसीजन which is more practical, which actually will serve benefit you and overall. You will be biased. गौरव जी, आप देख सकते हो, how are you centered? Yes, I think it is going to be more towards family and work. हाँ. I don't think कि नहीं, materialistic. don't go there. अगर Yeah. family and work dependent हाँ. है आपकी self worth, तो you Hmm. see how you let that impact you. जैसे अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सेल्फ वर्थ कैसे नीचे जाती है वो पकड़ो. या वर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सेल्फ वर्थ कैसे नीचे जाती है वो चीज को देखो, पकड़ो. When you will see that, then we will create a personal mission statement which is not dependent on family and work. आपकी Okay. सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ फैमिली और वर्क पे डिपेंडेंट नहीं होगी. तो इसको अगर जैसे जो सेंटर्डनेस है उसको कैसे शिफ्ट करना चाहिए? जैसे शिफ्ट नहीं करना, पहले देखो कैसे डिपेंडेंट हो. पहले फिगर आउट करो कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर पर्सनल लाइफ. Anushka, can you see how are you dependent? Yes. किस चीज से So I है? think Dependent. work and friend. Friend. You know, some Right. small thing also someone tells me who has a value in my life.
हाँ and the way it affects me, only I know. हाँ, तो आप लिखो, नोटबुक में लिखो, दो तीनों जने अभी पेन पेपर पे लो, लिखना शुरू करो कि आपकी सेल्फ वर्थ कैसे गिरती है. व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन इन दैट सेंटर जिससे आप अपनी आइडेंटिटी ड्रॉ कर रहे हो. Many older children go through life either secretly, openly hating their parents. They blame them for past abuses, neglect, and favoritism, and they center their adult life on the hatred, living out of the reactive, justifying script that accompanies it. The individual who is friend or enemy centered has no intrinsic security. Feeling of self worth are volatile, a function of emotional state or behavior of other people. Guidance comes from person's perception of how others will respond, and wisdom is limited by the social lens or by enemy centered paranoia. मतलब आप अपने डिसीजंस ऑफ लाइफ उस चीज पे बेस करोगे कि सामने वाला आपको किस तरह से देख रहा है, सामने वाला क्या सोचेगा. तो आप तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे ना, सामने वाला का ओपिनियन डिसीजन ले रहा है आपके लिए. द इंडिविजुअल हैज नो पावर, others are pulling the strings. Church centeredness. I believe that almost anyone who is seriously involved in any church will recognize church going is not synonymous with personal spirituality. There are some people who get so busy in church worship and projects that they become insensitive to the pressing human needs that surrounding. बहुत से लोग रिलीजियस सेंटर भी होते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी अपने रिलीजन की आइडेंटिटी से निकालता है. मैं सुबह शाम पूजा कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ. जिस दिन पूजा में सो जाएगी तो उनको लगेगा अरे मैं तो कितनी वो हूँ कि मैंने पूजा ही नहीं की, मैंने आज ये रिचुअली प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने आज ये नहीं किया, आज तो ये है, मैं आज प्याज नहीं खा सकती, और प्याज गलती से खा लिया या आलू जो गलती से खा लिया तो आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल गिर जाएगी. क्यों? क्योंकि you are drawing your identity, your self-worth, your self-esteem from religion, some tradition. You're not independent, you're dependent. Your self-worth is dependent on tradition, on religion. Having practiced throughout my life in an organized church and community service group, I have found attending church does not necessarily mean living the principles taught in those meetings. You can be active in church, but inactive in its gospel. In the church center's life, the image and appearance can become personal dominant consideration, leading the hypocritical life. Because the church is a formal organization, they made policies, programs, practices. Hinduism में भी तो है ना, आज चौथ का व्रत है, चौथ का व्रत नहीं किया, कुछ खा लिया तो आप तो सबसे घटिया इंसान उस दुनिया के. आप चौथ का व्रत नहीं कर पाए तो आप तो भाई रिलीजियस ही नहीं हो, आप तो स्पिरिचुअल ही नहीं हो, आप तो अपने हस्बैंड से प्यार ही नहीं करते. And it goes for men also. A lot of men are very religious. वो किसी दिन मंदिर नहीं गए या उनने पूजा पाठ नहीं की तो वो तो खुद को सेल्फ गिल्ट और सेल्फ हार्म में मार देंगे. एंड दूसरा आता है सेल्फ सेंटर्डनेस. परहैप्स द मोस्ट कॉमन सेंटर टुडे इज द सेल्फ, the most obvious form of selfishness, which violates the values of the most people. But if we look closely at many of the popular approaches to growth and self fulfillment, we often find self centering at their core. There is little. Can you explain that? वो अपन para? इसके बारे में पढ़ रहे हैं. जो सेल्फ ग्रोथ है ना, वो सेल्फ सेंटरिंग होती है, उनके कोर में सेल्फ सेंटर्डनेस होती है. आज अपन ये बुक रीडिंग कर रहे हैं तो मैं खुद का ही तो इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, तो सेल्फ सेंटर्डनेस है इसमें कहीं ना कहीं, राइट? There is a little security, guidance, wisdom, or power in the limited center of self. Like the Dead Sea at Palestine, it accepts but never gives. It becomes stagnant. On the other hand, paying attention to the development of self in the greater perspective of improving one's ability to serve, to produce, to contribute in meaningful ways gives context for dramatic increase in 4 life support factors. So self-centeredness भी दो तरह से हो सकती है. One to improve yourself, or one to just just take but never give. They are some of the more common centers from which people approach life. It is often much easier to recognize the center in someone else's life than to see it in our own.
यू आप दूसरे में देख सकते हो कि कौन अपनी आइडेंटिटी किस सेंटर से निकालता है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई योर सेंटर, मेन चीज ये है। वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। एक बार आपने ये देख लिया ना, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके पास चॉइस होगी पर्सनल स्टेटमेंट बनाने की। Perhaps the best way to identify your own center is to look closely at your life support factors. If you can identify with one or more of the descriptions below, you can trace it back to the center from which it flows. Most of the people are very much function of the variety of influences that play upon their lives. Depending on external and internal conditions, one particular center may be activated until the underlying needs are satisfied. As a person fluctuates from one center to another, the resulting relativism is like roller coasting life throughout. Richa, Hmm? isn't this center helps us in finding us the center of वो जो सर्कल दिखा था आपने, सेंटर ऑफ बोल रहे हैं सेंटर से आपकी सिक्योरिटी, पावर, विजडम, गाइडेंस आती है। अच्छा, जैसे अगर आपको चॉइस मिले कि आपको अभी काम पे जाना है या हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, अगर आप स्पाउस सेंटर्ड होगे ना, तो वो काम कितना ही इंपॉर्टेंट होगा, हस्बैंड के साथ बाहर चल जाओगे, यू विल बिकम इररिस्पांसिबल बिकॉज यू डोंट हैव एनी पावर टू थिंक इंडिपेंडेंटली। okay. तो ये चीज देखनी है कि व्हाट आर यू सेंटर्ड। इफ यू आर स्पाउस सेंटर्ड, इफ यू आर फैमिली सेंटर्ड, सिक्योरिटी, योर feelings of security are based on the way spouse treats you. And if you're family centered, your feeling of security comes from how your family treats you. Your personal sense of security, uh, your sense of personal security is as volatile as the family. अगर family ढंग से treat नहीं कर रही, तो आपकी personal security खत्म हो जाती है. Your feelings of self-worth are based on the family reputation. You are highly vulnerable to the moods and feelings of your spouse if you're spouse centered. अगर आपका हस्बैंड आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा, तो आपकी तो सेल्फ वर्थ का कचरा हो जाएगा। कि आपकी वाइफ की आपसे लड़ाई हो गई, तो आपकी तो सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ जाएगी आपके दिमाग में। Guidance. Your direction comes from your own needs and wants and from those of your spouse. Your decision making will be dependent on your marriage and your preferences and opinions of your spouse. आप इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं पाओगे, आपका स्पाउस जिस तरह से सोचता है आप उसी तरह से सोच पाओगे। अरे मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं तो मैं ये नहीं कर सकती, अरे मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगी, या मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है तो यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट। डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। Your family scripting is your source of attitude and behavior. Your decision making criteria is what good of family members wanted. तो जैसे अगर आपको लगता है आपके बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए, पर आपकी फैमिली ओपिनियन ऐसी नहीं है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि यू आर वेरी फैमिली सेंटर्ड। You will not be able to make a intelligent decision is what the book is saying. Wisdom. Your life perspectives around things may positively, negatively influence your spouse and relationship. अगर आप spouse centered हो, तो आप अपना लाइफ को उसी एंगल से देखोगे कि मेरे स्पाउस को और मुझे अच्छा अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा या बैड इन्फ्लुएंस करेगा। आपके देखने का तरीका ही वो होगा। You interpret all of your life in terms of your family, creating a partial understanding and family narcissism. आप फैमिली बायसनेस को नहीं देख पाओगी और आप बस ये देखोगे कि किस तरह से मेरी फैमिली इंप्रूव हो जाए। मतलब आप हर चीज को फैमिली से, आपके देखने का नजरिया फैमिली से आएगा, आपके देखने का नजरिया आपके स्पाउस से आएगा, या आपके देखने का नजरिया मनी से आएगा, या आपका देखने का तरीका ही इफेक्टिवनेस से आएगा, या चर्च से आएगा, या रिलीजन से आएगा। आप किसी और तरह से लाइफ के आप ये नहीं देख पाओगे कि गरिमा को क्या पसंद है, या गौरव को एक्चुअली में नीड क्या है लाइफ में, या निष्का को लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। You will not be able to connect with that because your self-worth is centered on something else. Your power to act is limited by the weakness of your spouse or yourself. Your actions are limited by your family models and traditions. Center. If you are money centered, if you are work centered. Security. Your potential worth is determined by your net worth. You're vulnerable to anything that threatens your economic security. If you're work centered, then you tend to define yourself by your occupational role. You're only comfortable when you are working. अगर आप काम नहीं कर रहे, खाली बैठे हो, तो आपको घबराहट होने लग जाएगी because your work,
आपकी सिक्योरिटी आपके वर्क से आती है. Guidance. Profit is your decision making criteria. You make your decision based on the needs and expectations of your work. Wisdom. Money making is the lens. You tend to be limited by Sorry to your work interrupt. role. I feel I am like all centered. Like when I'm thinking, when you're reading the book, I feel I'm spouse centered. I feel I'm family centered. I feel I'm self centered. So गरिमा how do I गरिमा get गरिमा आप ये देखो आपकी सेल्फ वर्थ कब कम होती है, सेल्फ एस्टीम कब गिरती है, this? कैसे गिर जाती है. Okay. उस चीज को लिखो, अभी हाथ के हाथ लिखो, आप सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ नोटबुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ फैमिली सेंटर्ड हो, या आप योर होल सेंस ऑफ वर्थ इज बेस्ड ऑन हाउ पीपल लुक एट यू. You are restricted to what you can accomplish with your money and limited vision. Your actions are limited by the work role models, occupational organizations. If you are work centered, your boss perception, your possible inability to point that in your life. If you're centered, possession centered, then your security is based on your status, things you process, reputation. If your pleasure censored, you feel secure only when you are on high pleasure. Your security is short lived and dependent on your environment. You tend to compare what you have with others if you are possession centered. Guidance. You make your decisions based on what will protect, increase, or better display your possessions. You will see bold in terms of comparative economy and social relationships. Your functions with them limitation of what you can buy and others can buy. Your power is almost negligible if you are pleasure centered. You make your decision based on what will give you the most pleasure. You see the world in terms of what it's in it for you. If you're friend centered and if you are enemy centered, your security is function of the social mirror. Garima, I think it's you. You are people centered. So your security is a function of social mirror. You are highly dependent on the opinions of others. Anishka, Yes. Anishka, your But then security, Yes, yes. your if I security think, is if I volatile compare, based on I the feel movements of your enemy of or your friend. You are always wondering what he is up to or she is up to. You seek self justification and validation from the like minded. ये तो मैं भी करती हूँ. मैं हमेशा है ना हाँ मैं भी. सेल्फ अप्रूवल सेल्फ वैलिडेशन मांगती रहती हूँ. मैं सही तो हूँ ना, मैंने सही तो किया ना, मैंने सही तो किया ना. I इससे think कब this हुआ कि मेरे जैसे सोचते हैं. गौरव जी, आर यू गेटिंग प्रेजेंट? हाँ, Yes, I am. माइंड ब्लोइंग है ना साइंस. this is mind blowing. This chapter. गौरव जी समझ नहीं पा रहे, मेरे को लग रहा कंफ्यूज्ड है. आप पकड़ नहीं पा रहे. हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं. व्हाट आई वाज वांटिंग टू से ये जो चार्ट है, ये जो 3-4 पेज का चार्ट है कि if you're work centered, then all those 4 things का क्या effect होएगा. So can you send the photo of this in the group so we can read it properly? I will do that. आपका वर्क सेंटर्ड मैं बताती हूँ. If you're work centered, you tend to define yourself by your occupational role. You're only comfortable when you're working. अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी काम पे बेस्ड है. आप खाली नहीं बैठ सकते, आप घूमने नहीं जा सकते, आप मजे नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्क सेंटर्ड. एफिशिएंसी, आप बीमार होगे तो भी आपको काम करना पड़ेगा. आप अपाहिज हो, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको काम करना ही पड़ेगा, वरना आपका जी उठ जाएगा. आप समझ रहे हो? So you're work centered. You're not free to make your own decisions because your self worth is coming from your work. You're not independent. You're dependent on your work. You make your decisions based on the needs and expectations of your work. आपका सारा डिसीजन मेकिंग आपके वर्क की डिमांड्स पर है. अगर आज कोई आपका स्टाफ ऑफ हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भाग कर जाओगे काम करने. आप सोच ही नहीं पाओगे. आप रिएक्ट कर जाओगे, क्या अरे स्टाफ नहीं आया, मुझे उसका जाके काम करना.
That's a reaction. That's not decision making. Hmm. You tend to be limited to your work role. You see your work as your life. Your Hmm. actions are limited by your work role models, occupational Hmm. opportunities, Hmm. organizational constraints, your Hmm. boss perception, your employees perception, your possible inability at some point of time to do a particular work. अगर आपकी वाइफ हॉस्पिटल चल जाती है और आप वाइफ सेंट्रिक नहीं होगे तो भी आप Hmm. काम के लिए पहले जाओगे. Hmm. आप mature decision नहीं ले पाओगे. You will be Hmm. biased is what the book Hmm. is saying. So you Hmm. just need to recognize how आप कितने लाचार हो जाते हो जब आप अपनी आइडेंटिटी किसी Hmm. एक एरिया ऑफ लाइफ से निकालते हो, Hmm. not from Hmm. people. That's it. Okay. Your decision making is criterion is what will they think. You are easily embarrassed. You are counter dependently guided by your enemy's action. You make your decision based on what will thwart your enemy. You see the world through social lenses. Your judgment is narrow and distorted. You are defensive, overreactive, and often paranoid. ये बोल रहा है कोई भी सेंटर सही और गलत नहीं है. अभी तो आप ये देखो ये कितना आपको लिमिट कर रहा है, कितना आप डिपेंडेंट हो. रिमेंबर अभी अपन हैबिट 1, 2 और 3 में डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट बन रहे हैं. अपन इमोशनली, फिजिकली, मेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते किसी चीज पे. वी आर लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट. At the moment you have to just see how you're dependent. You don't have any control. You are limited by your social comfort zone. Your actions are as fickle as opinion. The little power you have comes from anger, envy, resentment, vengeance, negative energy that shrivels or destroys, leaving energy for little else. If you're church centered, your security is based on church activity. Your security is constantly changing and shifting if you are self pleasure, self centered. The esteem in which you are held by those authority and influence in the church. अब जो religious होगा ना तो religious authority जो बोलते हैं ना ये सही है ये गलत है उस पे आपकी self worth और self esteem dependent होगी. You're guided by how others will evaluate your actions in the context of church, teaching, and expectation. Your judgment criteria are is it feel good? What I want? What I need? What is it in for me? If you're self centered, you won't be able to make decisions that doesn't feel good if you're pleasure centered. You see the world in terms of believers and non believers, belongers and non belongers. You view with if you're self-centered you view the world by how decisions events and circumstances will affect you. Power, perceived power comes from your church position and role. चर्च में पोजीशन जिस लेवल की होगी उससे आपको पावर मिलेगी बिकॉज योर यू आर ड्राइविंग योर थिंग फ्रॉम चर्च पोजीशन चर्च के दुनिया में हो आप. Your ability to act is limited by your resources without the. अब जैसे फैमिली सेंटर्ड होते तो फैमिली में आप किस तरह की पोजीशन, रिस्पेक्ट, फेम, इमेज होल्ड करते हो वो आपकी इमेज को कंट्रोल करता है, आपकी पावर को कंट्रोल करता है. अभी ये बोल रहा है अ प्रिंसिपल सेंटर इज अ न्यू सेंटर which is not dependent in any area of your life. By centering our lives on correct principles, we create a solid foundation for the development of 4 life support factors. Our security comes from knowing that, unlike other centers based on people, things which are subject to frequent immediate change, correct principles do not change. अभी जितने भी एरिया है ना वर्क, फैमिली, स्पाउस, रिलेशनशिप, फैमिली, चर्च, रिलीजन, ये सब चेंज होते रहते हैं. ये आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? It comes in the circle of concern and not in circle of influence. अगर आप इन पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप हमेशा बेचारे और अपाहिज बने रहोगे. Principles don't react to anything. They don't get mad or treat us differently. They don't divorce us, run away with our best friends. They aren't out to get us. They can't. आपके स्पाउस की तरह वो आपसे ना गुस्सा कर सकता ना कुछ कर सकता. The principles cannot be changed. They are not quick fixes. They don't depend on the behaviors of others, the environment, the current fad of the validity. Principles don't
die. They aren't here for one day and gone for the next. They cannot be destroyed by fire, earthquake, or theft. Are you understanding? जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, वो एवरग्रीन है ना. यू आर फ्री टू चूज. क्या है, कोई बताना, गौरव जी बताना क्या है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताओ. It is Right to vote. यस, राइट टू वो वोट. integrity, honesty, and there is one third word which I don't know. हाँ, तो ये प्रिंसिपल है, Hmm. ये कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी सिचुएशन पे. Principles are deep fundamental truths, classic truths, generic common denominators. They are tightly interwoven threads running in the exactness, consistency, beauty, and strength through a fabric of life. Even in the midst of people circumstances that seem to ignore the principles, we can be secure in the knowledge that the principles are bigger than people and circumstances, that thousands of years of history have seen them triumph time and again. Even more important, we can secure in the knowledge that we are validated in them, in our own lives, in our own experience. तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा, प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाएंगे तो. Admittedly, we are not omnipresent. Our knowledge and understanding of correct principle is limited by a lack of awareness of true nature and the world around us, and the flood of trendy philosophies and theories that are not in harmony with correct principles. ये बोल रहे correct, we are omnipresent तो है नहीं, तो अभी correct principles क्या होता है ये ढूंढना भी task है. We are limited by, but we can push back the borders of our limitations. An understanding of the principle of our own growth enable us to search out correct principles with confidence that the more we learn, the more clearly we can focus the lens through which we see the world. The principles don't change, our understanding of them does. Principles have correct maps from the way things are, have been, and will be. Correct maps enable us to clearly see where we want to go and how we got there. The personal power comes from principle centered living in the power of self aware, knowledgeable, proactive individual, unrestricted by the attitudes, behavior, and actions of others, or many of the circumstances and environment influences that limit the people. The only real limitation of power is the natural consequence of the principles themselves. तो ये बोल रहा है, if you pick up one end of the stick, you pick up the other. मतलब आपने कोई एक्शन लिया तो उसका रिएक्शन तो होगा ही. बोलते हैं ना कि आपके हाथ में कर्म है, उसका फल नहीं है. तो आप अपना कर्म चूज कर सकते हो. आप कर्म कैसे चूज करोगे? प्रिंसिपल बेस्ड पे. You cannot choose the fruit of the action. Principles always have natural consequences attached to them. There are positive consequences that we live in the harmony with the principles, and there are negative consequences when we ignore them. By centering our lives on timeless, unchanging principles, we create fundamental paradigm of effective living. अब ये तो principles का तो समझ में आ गया अपन को, right? अब अपन को ये देखना अपन कैसे create करें principle. मेरे को लगता है अपन को ये और पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं समझा चुकी हूँ. Write down to our motivation, our daily decision, our actions, our interpretations of events. That's why understanding our own center is so important. ये तो अपन ने कर लिया. As a principle-centered person, you try to stand apart from the emotion of the situation, from the other factors that would act on you, and evaluate the options. Looking at the balanced whole, the work needs, the family needs, the other needs that may be involved, the possible implications of various alternate decisions, you will try to come up with the best solution, taking all factors into consideration. गौरव जी, अनिष्का जी, गरिमा जी, अगर आप वर्क सेंटर्ड नहीं हो, स्पाउस सेंटर्ड नहीं हो, सेंटर्ड नहीं हो, रिलीजन सेंटर्ड नहीं हो, तो जब आप डिसीजन लोगे तो आप सारे सेंटर्स ऊपर से देख पाओगे, बट यू विल नॉट बी लिमिटेड टू वन सेंटर. इसलिए अपन प्रिंसिपल सेंटर्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं. इजी पीजी. Yes. बेसिकली हम हमें अपना हैबिट्स
स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है, जैसे हमने परसों हैबिट्स सीखा नहीं चेंज करना, अभी अपन प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे। अभी तो अपन समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अपन कितने कौन से सेंटर्ड में बसे हुए हैं। हाउ आर नहीं, वी जैसे अभी अवेयर हो रहे हैं। हम जैसे लाइक हाउ वी आर लर्निंग द हैबिट्स, लाइक वी आर इन द हैबिट नंबर 4, वी हैव टू दिस इज हैबिट नंबर 2, number 2. So first was the center of so being proactive. being proactive. Second was the That means being proactive means that you are working from the circle of influence, the yeah, things that not you can control, and you are not focusing on circle of concern. concern which you Yeah, cannot control. got it. That's it. Proactive means that's it. हम्म, कि आप उन चीजों पे फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में हो, और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हो, ठीक है. जिससे आपका सर्कल ऑफ कंसर्न आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए. हैबिट नंबर 2 इज कीपिंग एंड इन द माइंड. Okay. तो आप विजन क्रिएट करोगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या प्रिंसिपल से अपने डिसीजंस लोगे, वो क्रिएट कर रहे हैं अपन. ठीक है. ये बोल रहा है जो प्रिंसिपल सेंटर्ड होगा ना, whether you go to concert or stay or work is really a small part of effective decision. You might make same choice in number of different centers, but there are several important differences when you are principle centered. अगर आप principle centered हो तो you're not being acted upon by people and circumstances. You're proactively choosing what to determine to be best alternative. Second, your decision is most effective. Third, you what you choose to do contributes to your ultimate values in life. Staying at work to get the edge or someone else at the offers, मतलब आप उसमें है ना सोच पाओगे कि मैं ये काम किसी और से करवा सकता हूँ क्या, मैं डेलीगेट कर सकता हूँ क्या. गौरव जी, अगर आप वर्क सेंटर्ड नहीं होगे तो आप ये सोचोगे कि मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ क्या, किसी और से करवा सकता हूँ, right. क्योंकि यू आर नॉट वर्क, योर आइडेंटिटी इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर वर्क. तो अपन को राहुल सर भी सिखा रहे हैं कि स्टॉप बीइंग वर्क सेंटर्ड, स्टॉप बीइंग मनी सेंटर्ड. हार्ड वर्किंग विल नॉट गिव यू मनी. व्हाई? बिकॉज अपन पूरी आइडेंटिटी अपने वर्क से निकाल रहे हैं. The experience you have carry out the decision, take on quality and meaning in the context of your life as whole. Fourth, you can communicate to your wife and your boss within the strong networks that you have created interdependent relationship. Because you're independent, you can be effectively interdependent. You might decide to delegate what is delegable and come in early the next morning to do the rest. And finally, you will be comfortable with your decision. Whatever you choose to do, you can focus on it and enjoy it. अभी अपन कल करेंगे writing and using your personal statement. Yes, I think we can do this tomorrow. आज अपन को सिर्फ ये देखना है कि अपन कहाँ पे डिपेंडेंट है, एंड कल अपन ये पर्सनल स्टेटमेंट लिख लेंगे. Okay. चैप्टर्स बड़े हैं इसके, पर ये मतलब एक बार हाँ. समझ में आ जाते हैं ना तो जिंदगी भर के आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे. मतलब Okay. बहुत प्यारी बुक है. Okay. Yeah. ओके, थैंक Thank यू. you. Thank you, Richa. See you. Bye.